नमस्कार. Myself Dr. Ismail Kumar Mishra, Department of Sociology and Social Work, Bharati Vishwavidyalaya Durg, Chhattisgarh, welcomes you all in today's lecture. It is the second part of Merton's functional paradigm. In our previous class, we have discussed about first 5 formulas of Merton's functional paradigm. Today, we will discuss on the rest 6 formulas about Merton's functional paradigm, which is a model for functional analysis kind of research. So, the perspective of Merton is of that he has offered scholars a model, a view for any kind of functional analysis. Whosoever it may concern, he has given a standard model for analysis of functional issues and parts of the societies. Okay. हमने अपनी पिछली कक्षा में जो देखा, जो समझा, हमने देखा कि मर्टन ने किस प्रकार से एक अलग तरह का फंक्शनल एनालिसिस प्रस्तुत किया था. उनके बताए गए जो नवीन विचारधारा है और नवीन तरह के जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, जिसमें डिसफंक्शन और लेटेंट फंक्शन की अवधारणा जो कि पहले कभी नहीं किसी विचारक द्वारा, किसी समाजशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी, वो इनके द्वारा प्रस्तुत की गई और इसी के आधार पर उन्होंने स्कॉलर्स की मदद के लिए, आप जैसे शोधार्थियों की मदद के लिए ये मॉडल डेवलप किया था और आई थिंक ये मॉडल आपको समझ में आ रहा होगा. आज आगे के इन बिंदुओं पे और डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करिएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. अगर आप इसे समझ लेंगे तो एक नवीन प्रणाली जो है वो आपके समझ में आ जाएगी और आपका रिसर्च का जो व्यू है वो और समृद्ध होगा, एनरिच्ड होगा विद द हेल्प ऑफ मर्टन. तो हमारा 6वां बिंदु है, it is a mechanism useful for complete the functions. Mechanism useful for complete the function. The 7th is concept of functional alternatives. Concept of functional alternatives. The 8th one is structural pressure for function. Structural pressure for function. The 9th one is mobility and change. Mobility and change. The 10th one is reasonable certification of functional beliefs. Reasonable certification of functional beliefs. And the 11th and the last one is conceptual problems in functional analysis. Conceptual problems in functional analysis. So, now we will discuss on each points, each formulas of his model. The 6th is mechanism useful for complete the function. In previous class, we have discussed about what is function and what is the importance and the role of function in the whole social system. So, in this point, Merton's trying to explain that how a function and its mechanism is useful in the social system. Try to understand with the example. With the example, sociology is much clear to you. Like marriage. We take an example, marriage. Marriage is a social institution. Marriage is a social institution.
You know that. With the help of marriage, with the help of this social institution marriage, we identify and we categorize the relationship between men and women, and we also manage and restruct the next part of our family. We also manage the social system in the respective to recreate and rearrange family through marriage. Okay. विवाह नामक ये जो संस्था है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, और ये विवाह नामक जो संस्था है, ये परिवार को खड़ा करने में हमारी मदद करती है। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि दो प्रकार के परिवार होते हैं। एक तो जन्ममूलक परिवार होता है, जिसमें मैंने जन्म लिया, आपने जन्म लिया। दूसरा प्रजननमूलक परिवार होता है, जिस परिवार को हम जन्म देते हैं। विवाह के पश्चात एक नया परिवार, पत्नी, बच्चे, पति, बच्चे, एक नया परिवार खड़ा होता है हमारे साथ, और दोनों ही परिवारों को साथ लेके हमें चलना होता है। हम चलते हैं, और इसी से संबंधित ये सूत्र है मर्टन का, जिसमें वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे देखिए, आप विवाह की उपयोगिता देखें और विवाह का महत्व देखें तो बहुत अधिक है समाज में, क्योंकि विवाह द्वारा ही परिवार खड़ा हो रहा है। परिवार ही समाज की कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज फैमिली। माय फैमिली, योर फैमिली, आवर फैमिली इज अ फंक्शनल यूनिट। इट इज अ कोर ऑफ सोसाइटी, इट इज अ कोर ऑफ सोशल सिस्टम। तो ये जो कार्यात्मक इकाई है परिवार, ये विवाह के आधार पर खड़ा होता है। और विवाह क्या है? वो मैकेनिज्म है, विवाह वो मैकेनिज्म है which is useful for complete the function. The mechanism of marriage is useful for complete the function for the couple. The mechanism of marriage is useful for their further social life. अलग अलग प्रकार के जो संप्रदाय हैं, अलग अलग प्रकार की जो विचारधाराओं वाले लोग हैं या सोसाइटीज हैं, अलग अलग प्रकार की विवाह की प्रक्रियाएं होती हैं। एक ही समाज के अंदर भी विवाह की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग संप्रदाय और समूह वाले लोगों के साथ, मान्यताओं वाले लोगों के साथ। तो इनका मैडम कह रहे हैं कि द मैकेनिज्म ऑफ मैरिज इज यूजफुल। यू कैन टेक एनी एग्जांपल, आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ मैरिज, इट इज रिलेवेंट फॉर दिस formula and point. So the mechanism of marriage is useful for complete the function. Unless the mechanism of marriage is performed, we cannot categorize the relation of a woman and man, and it is discomfortable. So we are facing the new kind of challenges in this institution, marriage institute. There are some substitutes like live-in relationship and other kind of relationship, which is not appropriate institutionalization in it. So it is a problem for our society, like our traditional society, and it is also creating problem in foreign countries. Few kind of legal problems are related to it. It is an intrinsic part of this kind of new trend like legal relationship. So institutionalization marriage is a easy way of managing the relation and the social life of men and female. So हम देखें, ये बहुत ही कारगर उपाय है विवाह नामक संस्था के रूप में स्त्री पुरुष के संबंधों को, उनके निजी संबंधों को जो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का
संस्थाकरण का एक रूपांतरण दिया जाता है, एक स्वरूप प्रदान किया जाता है। इस स्वरूप के अंतर्गत ही वो जो है अपनी सोशल लाइफ को जी पाते हैं, आगे एक नया परिवार खड़ा कर पाते हैं। और इस नए खड़े होने वाले परिवार का सोसाइटी की उत्तरजीविता के लिए, समाज की उत्तरजीविता के लिए बहुत अधिक महत्व है, हम जानते हैं। और परिवार का क्या महत्व है और क्या इसके प्रकार यहाँ फंक्शन क्या है, ये इस पे और अधिक डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। पिछली कक्षा में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आप पहले से ही काफ़ी कुछ इस बारे में जानते हैं। Theoretical knowledge and practical knowledge also, because you are living in family, you know its functions and its importance. So mechanism useful for completing the function is like marriage, which is a kind of mechanism is useful for a couple to perform their social life and to create same kind of social system. Okay. Next point is concept of functional alternatives. प्रकार्यात्मक विकल्प, हिंदी में इसे कहते हैं फंक्शनल अल्टरनेटिव्स को प्रकार्यात्मक विकल्प। ये जो प्रकार्यात्मक विकल्प है, ये कंसेप्ट है, ये एक अवधारणा है आर.के. मर्टन की, रॉबर्ट किंग मर्टन की, बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। काफ़ी सारे सोशियोलॉजी के एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा भी जाता है। फंक्शनल अल्टरनेटिव जो है वो इनकी एक विशेष अवधारणा है। इसके पहले किसी और सोशियोलॉजिस्ट ने इस बारे में चर्चा नहीं की थी। जैसे डिसफंक्शन के बारे में चर्चा नहीं की थी, जैसे लैटेंट फंक्शन के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की थी। इट इज अ यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मर्टन, सो इट इज आल्सो फंक्शनल अल्टरनेटिव इज अ यूनिक कंसेप्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट किंग मर्टन। तो फंक्शनल अल्टरनेटिव का क्या अर्थ होता है, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रकार्यात्मक विकल्प से तात्पर्य यह है कि क्या एक प्रकार्य की पूर्ति दूसरे प्रकार्यों के द्वारा भी हो सकती है। ऑप्शन, एक प्रकार्यों की पूर्ति क्या दूसरे प्रकार्यों के द्वारा भी हो सकती है। लाइक दैट, एग्जाम्पल से क्लियर होगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। लाइक दैट, ह्यूमैनिटी इन दिस वर्ल्ड नीड्स religion. The majority of the mankind is theist. They believe in God, some kind of God, which have superpower, which are managing their lives, which are managing the whole universe. They believe in it. And the institutionalization of this belief are religions. So, the many kind of religions we have in this world, 300 kind of religions approximately. And those 300 kind of religions have different kind of belief system in it, different kind of traditions, different kind of rituals. But in this concept, Merton says there are functional alternatives. If the one religion is not work for you, there is a ready substitute for you. If one religion is not work for you, you can move to another religions. We do that. People are doing that. अगर कभी ऐसा होता है कि हम एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फिर भी हम दूसरे रिलीजन्स पर भी आस्था रखते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, हम मजार भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे भी चले जाते हैं, हम चर्च भी चले जाते हैं। If we are not orthodox, we can move to many kinds of religious belief and their institutions. We do that. It is normal. So it is functional alternatives.
मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मंदिर जाकर के मेरी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो रही है। जिस भी प्रकार की धार्मिक और आध्यात्मिक अपेक्षाएं लेकर के मैं चल रहा हूँ, तो मैं मजार की ओर भी रुख कर सकता हूँ, मैं चर्च की ओर भी रुख कर सकता हूँ, और भी ऑप्शंस वो करते हैं, लोग करते हैं, आप देखते हैं। और ऐसा सिर्फ आम लोग करते हैं ऐसे नहीं, ऐसा राजनेता भी करते हैं, बड़े पदों पर आसीन, ऐसा बड़े बड़े अभिनेता भी करते हैं, ऐसे बड़े बड़े वो शख्सियतें भी करती हैं जिन शख्सियतों को हम सक्सेसफुल मानते हैं और रोल मॉडल मानते हैं समाज में, बहुत फेमस है। तो फंक्शनल अल्टरनेटिव्स आर यूज्ड बाय ऑल इन सोसाइटी, all peoples. They are used by higher class, they are used by middle class, they are used by lower class. We use that. So the concept of functional alternatives are given by Merton, and this was the concept which we are discussing. The next point is structural pressure for function. Structural pressure for function. Try to understand it. संरचनात्मक दबाव, प्रकार्य के लिए संरचनात्मक दबाव किस प्रकार से समझने का प्रयास करिएगा। संरचनात्मक दबाव से तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जिस सामाजिक स्वरूप में जन्म लेता है और जिन परिस्थितियों से वो घिरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक हिंदू धर्म में जन्म लिया और मैं उस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, हिंदू धर्म से रिलेटेड, जहाँ मांस मदिरा का सेवन जो है, ड्रिंकिंग एंड नॉन वेज काइंड्स ऑफ फूड्स आर प्रोहिबिटेड. So this is a structural pressure for me. So in my whole life I will feel this structural pressure and I will follow it naturally. It is a part of my conditioning and I will follow it and I will condition my next generation also in it. I will expect to my children so they not be non-vegetarian and they should not drink alcohols and other kinds of that beverage. So it is a obvious thing. We feel that kind of structural pressure. There are many kinds of structural pressure related to you. You can feel it, you can observe it, and you follow it because it is a part of your conditioning, and you are at ease with your conditioning all the time. It is a part of your psyche, you can say it. And it is all described by many kinds of sociologists and psychologists and experts in various related fields. Okay, I think you understand it. The next point is mobility and change. Mobility and change. गतिशीलता एवं परिवर्तन. गतिशीलता एवं परिवर्तन. गतिशीलता एवं परिवर्तन की बात करते हैं मर्टन यहाँ पे. किस अर्थ में करते हैं, इसे समझने का प्रयास करिएगा। बहुत से सोशियोलॉजिस्ट हैं और विद्वान हैं, वो फंक्शनल थ्योरीज पे ये आरोप लगाते हैं कि इट इज स्टेबल, it is a static kind of theories and ideology. So Merton says it is not all the time static. Mobility and change occurs in it, in functional analysis and functional theories. How? It is a slow process, but it happens according to Merton. Like we can say and we can see that a caste system and when we are discussing about its functional image and process in our society,
So it is not static now, it is much more changed than before. The caste system has very kinds of new changes and transformations in it. So according to Merton, he says that functional theories are not so static and stable as people see. They have changed and they change, but the change is slow, but it is a considerable change and we can observe it and we can study it. So the functional theories have mobility and change according to Merton. Okay. The next one is reasonable certification of functional beliefs. Reasonable certification of functional beliefs. What it says, what this point says. Just like you understand with it example. देखिए, we have many kinds of universities in this world and in our country also. The function of the university is to develop the multi-dimensional growth for an individual, for its students. So normally we believe that the multi-dimensional growth of the individual is performed by universities, and universities are carrying it generation after generation, and the employers of the universities are constantly involved in these processes. We believe in it. The whole world and the whole society all over the world believes in it. But Merton says we have to discover about it reasonable certification. How much it is successful in its objectives and its purposes. Are they really helping the individual to get more knowledge or a multidimensional growth as we say ideologically? It is happening or not? It is in process or not? It is performing its duties and helping the individual in the way that we think, or it is a overwhelming pressure for the individuals and students? It is a way or it is an obstacle for the students? It has to be studied and it has to be reasonably certified. Okay, I think you understand it. इसको जो है हमें वैचारिक रूप से, तार्किक रूप से सर्टिफाई करना आवश्यक है। इसका हमें प्रमाणीकरण करना आवश्यक है कि जैसे हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज जो है वो ज्ञान का भंडार और मल्टीडायमेंशनल ग्रोथ प्रोवाइड करा रही हैं, तो क्या ये वाकई में हो रहा है? क्या स्टूडेंट इसे वाकई में प्राप्त कर रहे हैं और अपना विकास कर पा रहे हैं या नहीं? या किसी प्रकार की कोई दुविधा तो नहीं है, या किसी प्रकार की कोई बाधा तो नहीं है? इसे हमें सर्टिफाई करना होगा ना। तो यही बात कर रहे हैं मर्टन इस पॉइंट में। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट, conceptual problems in functional analysis. Conceptual problems in functional analysis. As a theory and as a tendency, the functional theories in itself has no ideological structure. ये एक दुविधा है प्रकारात्मक सिद्धांतों के साथ में कि इनका अपने आप का कोई आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। आप किसी भी चीज के फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, बट इसका अपने आप का कोई आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। आप किसी भी पार्ट के फंक्शन को उसकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, परंतु मर्टन कहते हैं कि इसका अपना कोई सैद्धांतिक जामा नहीं है फंक्शनल थ्योरीज का, फंक्शनल एनालिसिस का। तो ये एक समस्या होती है
अब इस समस्या का समाधान हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जिस भी प्रकार की बात हम कर रहे हैं वो इस मॉडल के आधार पे फंक्शनल जो एनालिसिस का फंक्शनल पैराडाइम का जो मॉडल दिया है मैटन ने, इसके आधार पे वो सटीक बैठ रहे हैं कि नहीं। हमारा जो फंक्शनल एनालिसिस है ना, इस मॉडल के आधार पे वो सही बैठ रहा है तो हमारी जो फंक्शनल आइडियोलॉजी की जो प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा जो सैद्धांतिक जो समस्या हमारी आ सकती है, उसका समाधान अपने आप हो जाएगा अगर इस मॉडल को हम लागू करके अध्ययन कर रहे हैं तो इस प्रकार की समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। हम सही तरह का प्रकारात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कर पाएंगे। आई थिंक आपको आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो समझ में आया होगा। आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, कल फिर मिलेंगे।